Hey guys, it's me and I just want to welcome all of you to my channel today. So I'm hoping that today in this video that my everyday looks something that is going to be easy for you and understanding just the power of makeup. So let's get started. So I'm using this Pond's cream as a moisturizer. And just apply all over your face. अच्छे से हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है अपने फेस पे. Now for me, Malio as a primer like this. प्राइमर हमें अपने पूरे फेस पे लगा लेना है. प्राइमर जो है हमारे स्किन और मेकअप के बीच एक वॉल का काम करता है. अगर हम प्राइमर नहीं लगाएंगे तो जितना भी मेकअप है हमारे फेस के अंदर जाएगा एंड देन उससे हमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है. बट प्राइमर जो है, प्राइमर एक वॉल क्रिएट कर देता है हमारे मेकअप और स्किन के बीच. Now I am giving you a tip. If you don't have primer, आप लोग एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. This is your tip number 1. So, color correction. This is a step that many of you may be able to skip. It's basically using different color like orange to purple, purple to green. It's basically enhance the different parts of the face where you have uneven coloration or discoloration. So for me, I especially focus on my under eyes. I like to do is my favorite color corrector from Kryolan. So orange actually cancels out the color blue. You can see the blue veins of my eyes. You can see this. So बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ब्लू यहाँ पे तो ब्लैक होता है, डिस्कलरेशन ब्लैक में आती है. सारे बोलते हैं मेरी अंडर आइज ब्लैक हो गई हैं. सो नो गाइस, ब्लैक नहीं होती, ब्लू होती है. हमारी वेन्स होती हैं यहाँ पे जो कि ब्लू होती है. सो जो ऑरेंज करेक्टर है वो हमारी ब्लूनेस को फिनिश करता है एंड जो ग्रीन करेक्टर है वो हमारी रेडनेस को फिनिश करता है. अगर हमारे पिंपल्स हो तो हम ग्रीन करेक्टर यूज़ करेंगे. ओके, सब मैं अप्लाई कर लूँगी अपना ऑरेंज करेक्टर आइज के नीचे जहाँ थोड़ी ब्लैकनेस जिसे आप बोलते हैं. यू कैन सी दिस. मैंने अप्लाई कर लिया है. Now I'm using the beauty blender. हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से. The next thing you are going to apply your foundation. So foundation that I have loved personally for years as the MAC Studio. This is in shade NW20. You can see this.
there is no such thing as the perfect foundation shade, and if you do find it, hold on it. So I'm going to apply it. Now I'm using this beauty blender. हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, सिर्फ टैप करना है हमें अच्छे से, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना, रगड़ना नहीं है ऐसे स्किन पे, वरना पैची हो जाएगा हमारा फाउंडेशन. So now I'm conceal my under eyes. I'm using this MAC concealer, MAC Pro concealer. थोड़ा सा हाथ पे ले लेंगे हम इसको और अपने आईज के नीचे और ऊपर अच्छे से लगा लेंगे. पॉइंट है दिस टी पॉइंट एंड दिस अंडर आई, ये हमारे टी जोन है जो कि हमारा हाईलाइट पॉइंट होता है, जिसको हमें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे मेकअप के लिए. अब हम इसको अच्छे से टैप 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 टैप. Alright, we are setting the face, so I'm using this setting powder. Alright, so now I'm going to fill my eyebrows, which is very important, guys. So we are going to do our powder contour. So what a contour can do for you is can give your face so in dimension. It can hide your double chin and your cheek, your fluffy cheeks, or whatever. So I'm using this angled brush. Focus on the area where I wanna define. हमें अच्छे से इसको कॉन्टोर कर लेना है. हमें अपनी नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर करना है. So I'm gonna come to the eyeshadow. You can do whatever colors. For me, I personally like in the brown family, like it looks pretty natural, bronzy and glossy. So I'm using this Morphe palette. I'm using transition brush. I'm picking these shapes. Now I'm using this brown shade to cut my crease. Using this Color Studio palette. So I'm using this shimmer shade. इसको मैं अपने फिंगर से अप्लाई करूँगी. स्मॉल फ्लैट ब्रश से अपने आईज के नीचे भी थोड़ी डेफिनेशन दे दूँगी. I'm applying this gel liner.
can see the shine. Now I'm applying this Huda Beauty lipstick, which is my favorite color. Now I'm going to put kajal on my eyes. So alright, this was my everyday kind of makeup. If you did enjoy the video, I just please encourage to click the subscribe button and comment below. So alright, until next time, bye bye.